Hello, children. Today I want to talk about something which I generally don't. मतलब मैं इस तरह के कॉमेंट्री टाइप के वीडियोस नहीं बनाती, बट बहुत ही ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट मुझे लगा कि हम बात करने वाले हैं टुडे. So let's start. I want to talk about what Infosys co-founder Narayana Murthy recently said, which is कि यूथ को तो मतलब जो है 70 आवर्स काम करना चाहिए. एंड आई वाज लाइक दिस हैज़ टू बी डिस्कस्ड. आई थिंक मोस्टली मेरी ऑडियंस में ज़्यादातर लोग यंगस्टर्स हैं, फ्रेशर्स हैं, पीपल हु आर आइदर लुकिंग फॉर अ जॉब और हु आर स्टार्टिंग आउट. एंड आई थिंक सेटिंग अ बैड एग्जाम्पल और सेटिंग अ रॉन्ग एग्जाम्पल इज समथिंग दैट वी नीड टू टॉक अबाउट. सो उन्होंने बेसिकली ये बोला था कि जो नौजवान लोग हैं, है ना, नौजवान से मैं वही समझूंगी भाई जो ग्रेजुएट हो गए हैं कम से कम, क्योंकि इंडिया का थ्रेशोल्ड वही है. देर आर वेरी फ्यू पीपल हु स्टार्ट वर्किंग इन 16-17. वो रेशियो बढ़ रहा है बिकॉज देर इज़ दिस हाइक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टिंग समथिंग ऑफ देयर ओन और इवन डूइंग पार्ट टाइम जॉब्स. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अब लोगों को इंटर्नशिप में पैसे मिलते हैं. तो कि वो कह रहे हैं कि नारायण मूर्ति जी ने कहा है कि यंग लोगों को 70 घंटे काम करना चाहिए वीक के. ठीक है, अभी तक कॉरपोरेट कंपनीज में नॉर्मली जो एक स्टैंडर्ड है नंबर ऑफ आवर्स का, एक दिन में 8 से 9 घंटे कंपनियां काम कराती हैं. कुछ कंपनियां 10 भी कराती हैं, कुछ 12 भी करा रही होंगी, उससे ज़्यादा वाली भी होगी. लेकिन एक स्टैंडर्ड में बोल रही हूँ कि कॉर्पोरेट कल्चर में जहाँ पे एक स्ट्रक्चरल हायरार्की है, वहाँ पर 70 आवर्स अ वीक का जो है क्राइटेरिया बिल्कुल नहीं है. वहाँ पे 40 आवर्स अ वीक है. ठीक है, उसमें से भी कई सारे लोग हैं जो ओवर टाइम पक्का करते होंगे. बट आई एम जस्ट सेइंग दैट हिज स्टेटमेंट वाज कि 70 घंटे काम करना चाहिए सो दैट वी कैन इन्हांस इंडियाज competitiveness. Now this has sparkled a debate, and people are discussing about the ideal work-life balance and the impact of long working hours on employees' health and well-being. काफ़ी बूमर टाइप का उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, आई हैव टू से, बिकॉज okay, I want to start with logical reasoning here. I don't want to roast him or anything, because I also work in a very structural organization where we have fixed number of hours that we'll be working. So from a logical standpoint, working such long hours can lead to burnout एंड डिक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी. आप ग्लोबली जितनी भी अच्छी बड़ी कंपनीज हैं जहाँ पर आपको प्रॉपर काउंसलिंग मिलती है, कंपनीज हु प्रोवाइड थेरेपी टू देयर एम्प्लॉयज़, वन थिंग दैट यू विल सी कंसिस्टेंटली इज़ दैट दे ऑलवेज एडवाइज मैनेजर्स कि अपने टीम मेंबर्स को जो है, आप जब भी काम दोगे तो उनको ओवरबर्डन नहीं करना है आपको, बिकॉज उनकी प्रोडक्टिविटी लॉन्गर टर्म में नीचे चली जाएगी. थोड़े टाइम के लिए ठीक है, एवरीबडी पुशेज, राइट. आई डोंट थिंक सो हमें से कोई भी जो लोग कॉर्पोरेट में काम करते हैं, ऐसा कोई भी होगा जो बोलेगा अरे डायरेक्ट मैनेजर को, नोबडी विल गो एंड से ओ आई एम नॉट गोइंग टू वर्क ऑन दिस. नोबडी विल गो एंड से दिस, राइट. But we'll always tell them that these are the tasks that I'm already working on and how should I reprioritize, correct? So I think quality often suffers when quantity is prioritized, and to such an extreme जहाँ पे वो बोल रहे हैं कि भाई 70 घंटे काम कराओ. So if you see human brain, if you observe the body of a human, we need an adequate rest to function optimally. अगर हमें पूर्ण रूप से, मतलब बहुत अच्छा काम अगर हमें डिलीवर करना है, तो एक रीसेट बटन हमारी बॉडी में है. तभी हमारे आँखों में नींद कब आती है, जब आपकी बॉडी को रीसेट बटन चाहिए भाई, उसको पता है कि उसको रेस्ट करना है. सो आई फील दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. आई एम नॉट गोना शुगर कोट इट. ऑब्वियसली आई डोंट थिंक नारायण मूर्ति को मेरी एग्जिस्टेंस से भी फ़र्क पड़ता होगा, विच इज़ फाइन. आई थिंक फटीग can impair decision making, okay, creativity, problem solving skills, and ultimately hindering rather than enhancing the work. Because आप mostly देखोगे कोई भी कॉरपोरेशन या कोई भी कंपनी आपको जो है ना, ऐसा कोई काम नहीं देती जिसमें उनकी प्रॉब्लम बढ़े.
people hire human resources because they want decision makers, they want creative people who will create content for them, they want problem solvers. They don't want people always complaining about अरे मेरे पास इतना काम है. So if you overburden them, they'll burn out and they won't be able to perform. Now let's bring in some statistics into this. So there have been studies that have shown that excessive working hours are linked to negative health outcomes, and I'm saying this from a personal point of view. I was working for a company wherein previously I was working for a company when I was working for 13-14 hours, and I went to my cardiologist. I was facing chest pain on regular basis, and he said, how many hours do you sleep? That was his first question after looking at my reports. And I said, yeah, I sleep for like 4-5 hours. And he instantly said, you need to sleep at least for 7 to 8 hours. If you can't sleep for 8 hours, whatever your shift hours are like, I'm not going to question that because that's your decision. But if you can't sleep for 8-9 hours, at least sleep for 7. Okay. And he said, you really need to rest because you are increasing the heart disease risk for your body. And I was taken aback, and I had to speak to my manager. I had to quit that job because nothing, I'm telling you guys, whatever you are working for, आपकी ज़िंदगी वापस नहीं आ सकती है. ओके. सो आप अगर ये हसल कल्चर आपको करना है ना, ठीक है यार, यू डू योर वर्क, आप पूरी शिद्दत से अपना काम करो, बट ऑल्सो टेक रेस्ट इफ़ यू हैव दैट प्रिविलेज. इफ़ यू हैव पेड टाइम ऑफ, टेक इट. यू डोंट बी इन दैट प्रेशर कि अरे मैं क्यों. कुछ लोग इस चीज़ में बहुत प्राउड फील करते हैं, पता है तेरे भाई ने छुट्टी ली, पता है तेरे भाई ने तो भाई इतने दिन काम किया. ग्रेट, यू आर वर्किंग ऑन योर टास्क, ग्रेट. इट्स, you should acknowledge it, you should be appreciated for it, but I don't think you should be going to hospital for it, right? So I think there was this study, ठीक है, जो Lancet में publish हुई थी, wherein it was found that working 55 hours or more per week is associated with a 35% higher risk of stroke. Do you understand? And a 17% higher risk of dying from heart diseases compared to a 35 or 40 hour work week. So this indicates that pushing 72 hours a week might not be the best interest of long term. And even if we see it economically, there is a counterintuitive aspect to consider. Overworking employees might seem like a way to increase output in the shorter term, but it often leads to higher healthcare costs due to stress-related illness or decreased efficiency. And moreover, a tired and stressed workforce is more likely to make mistakes, leading to potential financial losses for the company. बार बार वो employee आपका mistake करेगा. So employee turnover is also a cost that shouldn't be ignored. आप अपने एम्प्लॉय को 30, 40, 50, 60 जितनी भी तनख्वाह दे रहे हैं, वो इसलिए दे रहे हैं कि वो आपको अच्छा काम करके दे. अगर वही काम वो गलत कर रहा है 40 बार क्योंकि आप उससे 70 घंटे काम करा रहे हो और उसकी प्रोडक्टिविटी नीचे जा रही है, तो आपका एम्प्लॉय कॉस्ट, आपका भी नुकसान हो रहा है एज अ कंपनी. सो it should not be ignored. Burnout often drives talented individuals away and requiring resources to recruit and train replacements. Okay, so let's also look at the concept of work-life balance, which is often talked about, but I also want to touch upon that research consistently shows that a good work-life balance enhances job satisfaction, employee retention, and overall well-being of an employee, right? So when people are allowed time for personal pursuits and family, they return to work rejuvenated, right, and more focused, and this contributes to a positive work environment and in the longer run higher employee लॉयल्टी और कमिटमेंट, यू कैन से. क्योंकि अगर आप अपने एम्प्लॉय को दे रहे हो पेड टाइम ऑफ, ओके, इफ़ यू आर गेटिंग 30, 40, हाउएवर वट एवर द नंबर इज़, साल की अगर आपको फिक्स्ड छुट्टियां मिलती ही हैं, पब्लिक हॉलीडेज़ मिलते हैं, तो छुट्टी के दिन के बाद जब आप अगले दिन जाओगे ऑफिस में, यू विल फील रिजुविनेटेड. Of course, there are concepts of Monday blues and all of that, but think about it from a bigger perspective, that if you give your employees paid time off,
okay, they go for a vacation for 5-6 days and they come back, they've had a good time away from all the chaos of the city, of the traffic, of the work related things, right? Now when they come back, they are rejuvenated and they'll be performing better. So additionally, the evolving nature of work in the 21st century emphasizes the importance of flexibility. So with technological advancements like remote work and gig economies on the rise, the focus is shifting towards results rather than the hours spent at a desk. क्योंकि कुछ लोग सिर्फ सोचते हैं कि इतने घंटे काम हमको कराना ही है, बट उतने घंटे में भी अगर उस एम्प्लॉय ने आपको एक टास्क कंप्लीट करके नहीं दिया तो व्हाट्स द पॉइंट? सो नंबर ऑफ आवर्स इज नॉट इक्विवेलेंट टू परफॉर्मेंस. A lot of people think like that, but ऐसा नहीं है. A more flexible approach to work hours can lead to increased employee satisfaction and can attract a wider talent pool, for the lack of better word. So in conclusion, while Narayana Murthy's perspective may stem from a desire for dedication, शायद क्योंकि पहले भी बहुत सारे लोगों का ऐसा होता था कि ज़्यादा काम करो, अरे बिल्कुल ही मतलब आप डेडिकेट हो जाओ, इट डज नॉट मैटर, दिस हसल कल्चर इज़ नॉट समथिंग न्यू. ठीक है, हमने टर्म नहीं दे दी है, लेकिन पहले हम इसको बोलते थे कि दृढ़ता के साथ काम करो. Right, it's crucial to balance hard work with the well-being of individual. So quality work, employee health and a sustainable work environment should be prioritized. Okay, and embracing a more balanced and flexible approach not only aligns with the contemporary workforce trends but also contributes to the long-term success and sustainability of businesses. So working smarter, not necessarily longer, should be the mantra for a progressive and healthy work culture. I would love to know what are your thoughts on this, because मैं completely 100% disagree करती हूँ जो भी उन्होंने कहा. आदमी के लिए ज़िंदा रहना बहुत ज़रूरी है नारायण जी, नहीं तो नारायण नारायण हो जाएगा उसका. So it's better if we give flexibility to employees. It's better if we understand. We have to also look at the data. We also have to look at if we are doing something like this. इसके closer भी अगर हम कुछ कर रहे हैं, are people leaving our companies frequently? If yes, then there is a structural problem. There are bad employees also, let's be honest. बुरे employees भी होते हैं हर जगह, but we also have to see these studies, we have to see the data, we have to see what is happening in the company and around, and as per that we need to make that decision. I hope you guys like this mini podcast. I've put in a lot of thought what I'll be talking about. I just prepared a couple of pointers and I hope आप लोग अपने विचार विमर्श मुझे ज़रूर बताएंगे. Bye.